My dear colleagues at bar, dear law students, respected judges, ladies and gentlemen, case law on bail, that is topic for my today's video. Yes, landmark case law on law of bail in Pakistan. My dear fellows, it is PLD 1995 Supreme Court page 34. Tariq Bashir वर्सेस द स्टेट. इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक बेल के मौजू को डिस्कस किया. दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इन बेलेबल केसेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल केसेस, एंड नॉन बेलेबल केसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो टेकिंग वन बाय वन. In this judgment, it has been held while interpreting the section 496 and 497. 496 deals with bail in bailable cases and 497 bail in non-bailable cases. Well, it has been held by the apex court of this country that in bailable cases, bail is right of the accused person and bail cannot be refused. In bailable cases, bail is right of the accused. In non-bailable cases, bail is not a right but a concession and a matter of grace. Non-bailable cases are further divided into two categories. One, ऐसे cases where the punishment is less than 10 years. That is one category. And the other category is where the punishment provided under the law is more than 10 years, life imprisonment or death. Well, it is established principle of law of bail that bail in those cases where the punishment is less than 10 years, जिसको हम कहते हैं prohibition clause में fall नहीं करते. Case does not attract the prohibition clause of section 497. In such cases, bail is granted as a rule and refusal is an exception to the rule. So, repeating it again, if accused is involved in a case where punishment is less than 10 years, bail is granted as a rule and refusal is an exception to this rule. And very, very extraordinary circumstances are required to refuse a bail जहां punishment less than 10 years की. उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में 1, 2, 3, 4 करके बहुत क्लियर कट इंटरप्रेट कर दिया हुआ है कि what are the circumstances in which bail can be refused in a case where punishment provided under the law is less than 10 years. The first is where there is likelihood of abscondence of the accused, meaning thereby जहां इस बात का खदशा हो कि बेल ग्रांट कर दी गई तो ये मफरूर हो जाएगा, तो बेल कैन बी रिफ्यूज्ड. अगर 10 साल से कम भी सजा है तो बेल में बी रिफ्यूज्ड. सेकेंड, where there is apprehension of the accused tampering with the prosecution evidence, जहां इस बात का अंदेशा हो कि अगर इस पर्टिकुलर मुलजम को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को ये टेम्पर करेगा, जिसका ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को नुकसान होगा, तो बेल कैन बी रिफ्यूज्ड. थर्ड, वेयर देयर इज डेंजर ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपीटेड इफ द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल. थर्ड कैटेगरी वो है जहां इस बात की अप्रीहेंशन हो, खदशा हो कि ये इस जुर्म को दोबारा रिपीट करेगा अगर इस पर्टिकुलर अक्यूज को जमानत पर रिहा कर दिया गया. एंड द फोर्थ इज वेयर देयर अक्यूज्ड इज प्रीवियस कॉन्विक्ट, आदि मुजरम है, पहले उसको सजा हो चुकी हुई है, तो अगर लेस देन 10 ईयर्स भी है तो बी बेल मे बी रिफ्यूज्ड. सो माय डियर फेलोज, सारी बात ये हुई कि बेल का कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, बेल ऑफेंसेस बेल के हवाले से दो कैटेगरीज में हैं, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. बेलेबल ऑफेंसेस 496 कहता है बेल इज राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन. इन नॉन बेलेबल केसेस 497
डील करता है और वो कहता है कि नॉन बेलेबल केसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। जहां जो केस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, कौन से केस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं? वेयर द पनिशमेंट इज मोर देन 10 years लाइफ और डेथ। वेयर punishment is less than 10 years, the established law of bail is granted as a rule and refusal is an exception to the rule। और exceptions वही हैं 4 जो मैंने अभी गुजारिश की है। और अगर केस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर जाता है यानी मोर देन 10 years, देन बेल मना कर दी गई है। अब प्रोहिबिटरी क्लास को मैं यहां आई वुड लाइक टू गिव माई ऑन इनपुट। प्रोहिबिटरी क्लास को मैंने देखा है अक्सर जजेस प्रॉपरली, सबऑर्डिनेट जजेस खास तौर पे, वो प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। प्रोहिबिटरी क्लास डज नॉट मीन एट ऑल मैक्सिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। प्रोहिबिटरी क्लॉज की असल रूल जो है वो ये है, प्रोहिबिटरी क्लॉज मीन्स दैट कोर्ट एट द टाइम ऑफ द ग्रांटिंग द बेल, court should tentatively assess the prosecution's evidence, other factors कि what ultimate punishment provided under law जो भी है, FIR में पुलिस ने जो भी ऊपर सेक्शन लिख दिया है उसकी मैक्सिमम सेंटेंस नहीं, what ultimate chances are कि ट्रायल में इसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। वो पनिशमेंट जो अल्टीमेटली उसको मिलेगी वो अगर 10 साल से ज्यादा है तो केस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करेगा, वो अगर 10 साल से कम है तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करेगा। इसके मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक शख्स FIR दर्ज कराता है, वो कहता है जी मैं मॉडल टाउन में रहता हूं और DPS स्कूल के सामने मेरा घर है। मेरा मुलाजिम बाहर निकला तो DPS स्कूल के मुलाजमीन, सारे मुलाजमीन ने उसको मार के लाठियों से, बंदूकों से, गनों से उसको कत्ल कर दिया। कोई स्पेसिफिक रोल वो नहीं है। FIR दर्ज हो जाती है सेक्शन 302 की। अब क्या अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर केस में जो सादा सी एग्जांपल मैंने दी है, क्या DPS के सारे मुलाजमीन को सजाए मौत हो जाएगी? ऑफ कोर्स नो। सो टेंटेटिवली असेसमेंट करते हुए कोर्ट शुड सी कि व्हाट अल्टीमेट पनिशमेंट is going to be awarded. If that punishment is more than 10 years, case will fall in the prohibitory clause, otherwise it will not attract the prohibitory clause of section 497. So my dear fellows, this is the landmark judgment on law of bail in Pakistan, PLD 1995 Supreme Court, Tariq Bashir versus the state. And with this I say goodbye.